Good morning to all. Students, this is second video of model auxiliaries. During first video, we learnt the list of model auxiliaries, why we use. In the second video, I am going to highlight other model auxiliaries and their uses. So our next model auxiliary is will, where we use will. Firstly, to express future with second and third person. It means when we form a sentence to when we plan an activity which is going to be held in future, we use will as a helping verb with second and third person. For example, he will go home today. You will speak truth before judge. Here, he and you. These are second and third person. Further use of will is to express intention, promise, threat, and determination. Intention means plan. When we plan to do something. For example, I will go to market today. मैं आज बाजार जाऊंगी. Next is promise. Promise means वादा करना. I will not repeat this mistake next time. By using will in this sentence, I am ensuring to other person कि I will not repeat this mistake next time. It means I am promising to other one. Next is threat. Threat means धमकी देना. I will avenge his death. Next is determination. Determination means when we show our firmness. हम अपना दृढ़ संकल्प शो करते हैं. I will do or die. Will is also used to express assumptions and request. Assumption is a word, mostly it is used in economics for making a law when we make some condition under the heading of assumptions. And request is, you know the meaning of request. And will is also used, for example, बहुत पोलाइट टोन होता है बेटे जब रिक्वेस्ट की फॉर्म में यूज की जाती है मॉडल ऑक्सिलरीज. विल यू प्लीज ओपन द डोर. अब हमारा टोन हार्श नहीं है. प्लीज, विल यू प्लीज ओपन द डोर. दिस इज नॉट राइट वे. वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट. विल यू प्लीज ओपन द डोर. एंड इन द फॉर्म ऑफ एजम्पशंस कि हम मान रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता. ही विल बी हियर एनी टाइम, कि वो किसी भी टाइम पे यहां होगा. नेक्स्ट यूज ऑफ विल इज टू इंडिकेट कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्विटेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन मेरिट्स, फीचर्स एंड एडवांटेजेस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू मार्केट टू बाय अ machine, then salesman ensures us by saying that this machine will work very well and will not give any trouble. It means by saying this statement, he tries to convince us by showing the characteristics of machine. It will work very well in future and not give any trouble. Or in the sense of invitation, will you have tea? Will you have a cup of coffee? Will you have a glass of water? Next, the most important thing that you must always keep in your mind, that will is never used with the first person in the interrogative sentence. Interrogative sentence में कभी भी first person के साथ will use नहीं करना. Next model auxiliary is would. As we know that would is past tense or past form of
will. And as a past tense of will in indirect sentence, speech, indirect sentence, it is used. In reported speech, will is converted into would when we convert the sentence of direct form into indirect. Let's understand with the help of this example. He said to me, I will go to Delhi. This is the formation of direct sentence, and while converting the indirect sentence, he told me that he would go to Delhi. So clear from the example that will convert into would. Next, to habit, express a habit in the past. जब when we talk about our habit in the past, जब हम अपने कोई भूतकाल की पास्ट टाइम की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वुड सिट ऑल डे विथ द बुक इन हिज हैंड, कि वो सारा दिन अपने हाथ में किताब लेके बैठा रहेगा. टू एक्सप्रेस विलिंगनेस. अब ये व्हाट्स द मीनिंग ऑफ विलिंगनेस? विलिंगनेस होती है वी विश टू डू सम वर्क. हम विलिंग हैं, हमारी काम करने की इच्छा है. जब हम अपनी हाँ को हाँ मिलाते हैं किसी, तो देन वी आर विलिंग. आई वुड डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस विश. विश मीन कोई इच्छा, कोई डिजायर. हम कहते हैं ना, काश मैं भी अमीर होता. वुड दैट आई वर वेल्दी. एंड to express wish, one more thing, please note it down, that we will use the mark of exclamation here. To express request. Earlier I told you students, when a modal auxiliary is used to express request, then that time our tone must be very polite. See, would you please open the door? So beta, these are the uses of would. After that, now I am focusing your attention towards the next modal auxiliary, that is can. Can mean सकता हूँ. सकता, फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस एबिलिटी. जब हम अपनी योग्यता को एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस सम. तो मैं ये सम सॉल्व कर सकता हूँ, ये सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ. तो आई एम शोइंग माई एबिलिटी. आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. आई एम शोइंग माई एबिलिटी. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस परमिशन. परमिशन मीन्स आज्ञा देना. यू कैन गो नाउ. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन जब हम संभावना को शो करते हैं कि ऐसा हो सकता है. दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड. हियर अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अबाउट द यूज ऑफ कैन, दैट कैन नेवर एक्सप्रेस पास्ट टाइम. कैन को कभी भी पास्ट टेंस में एक्सप्रेस नहीं कर, एबिलिटी को शो करेगा, बट प्रेजेंट टाइम में, नॉट विद पास्ट टाइम. तो पास्ट टाइम में हम क्या यूज करते हैं? इन पास्ट टाइम वी यूज वॉज एबल टू एंड वर एबल टू. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द सम. इन फ्यूचर ऑल्सो, how to express at the place of can? Shall be able to and will be able to. I hope he will be able to solve the problem. Next use is use of could. So as clear that could is a past form of can. Can, could. So where we use could? So many similarities between the use of can and could, but in the different sense. Can
is used to express the ability in present tense and could is used to express the ability in the past tense में use करते हैं. For example, I could swim across the river when I was young. So through this sentence speaker is telling us about his ability कि when he was young he could swim across the river. Again, could is also used to express polite request. Could you please let me have your book? To express possibility. This road could be blocked. ये रोड ब्लॉक हो सकता था. वह कैन हो सकता है, कुड हो सकता था. To express permission. Could I use your telephone? Could I use your pen? परमिशन की सेंस में भी कुड बहुत पोलाइट सेंस में यूज किया जाता है. योर टोन मस्ट बी वेरी पोलाइट so that the other person could convince and permit to you to use his or her belongings. Thank you. Have a nice day.